Hello students, continuing with chapter 12, three-dimensional geometry. We are now studying section formula. So in that section formula, in class 10 also we have studied. Let us say line AB or line joining AB is divided in the ratio m ratio n by point P. The coordinates of point A are x1, y1, z1, whereas coordinates of point B are x2, y2, z2, and point P having coordinates x, y, z divides it in the ratio m ratio n. और ये हम internally की बात कर रहे हैं. Internally का मतलब होता है point P is lying between A and B, and you all must be knowing about class 10 formula. What it was? mx2 plus nx1 अपॉन m प्लस n. ये तो x कोऑर्डिनेट हो गया. y कोऑर्डिनेट विल बी my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n, एंड द z कोऑर्डिनेट विल बी, ये एक्स्ट्रा ऐड हो गया बस, mz2 plus nz1 upon m plus n. You all know how to solve it. In class 10 you have done this. Now let us take when point P is lying outside AB, और वो कहलाता है एक्सटर्नली डिवाइड करना. ठीक है, m रेशो n में, करेक्ट. Coordinates of A x1, y1, z1, coordinates of B x2, y2, z2, and as usual coordinate of P are x, y, z. करेक्ट है. ये एक्सटर्नली है since point P lies outside A and B और line AB. कोऑर्डिनेट x क्या हो जाएगा? mx2 minus nx1 अपॉन m minus n. बस माइनस हो जाता है. आप सबने क्लास 10 में ये फॉर्मूला पढ़ रखा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ टू डायमेंशनल ज्योमेट्री. थ्री डायमेंशन में बस ये z एक्स्ट्रा ऐड हो जाता है, दैट इज mz2 minus nz1 upon m minus n. This will be given to you. This will be given to you in the question itself. And the third condition was if P is midpoint of A and B. So therefore x coordinate will be x1 plus x2 divided by 2, y coordinate will be y1 plus y2 divided by 2, and z coordinate will be z1 plus z2 divided by 2 होता है. करेक्ट है. We will take one example of collinearity of points, okay, and then you can do all the questions related to this. Example 8 on page 275 says, using section formula, we have to show that point A minus 4, 6, 10, B coordinates 2, 4, 6 and C having coordinates 14, 0, minus 2 are collinear. So हम क्या करते हैं, हम एक और कोई पॉइंट ले लेते हैं P which has coordinates ABC and B says कि it divides AB in the ratio K ratio 1. So value of A will be mx2 plus nx1. So it will be mx2 plus nx1 upon m plus n. Similarly it will be 4k plus 6 upon k plus 1 and 6k plus 10 upon k plus 1. Now if x coordinate of P which is A, हम मान लेते हैं कि ये C के जैसा ही है, ठीक है ना, is 14. Why you are taking is 14? Because it is equivalent to C. So what we will do, we will put the value of A as 14. So 14 is equals to 2k minus 4 upon k plus 1. When you will solve it, k की value आ गई minus 3 by 2. Now let us put this value of k as minus 3 by 2 in coordinate to find the coordinates of B and C, small b and small c. So 4 into minus 3 by 2 plus 6, ये आ गया 0. So value of B is 0. What about C? C is equals to हो गया जी 6 into minus 3 by 2 plus 10 upon minus 3 by 2 plus 1. So ये कितना हो गया
माइनस 9 प्लस 10 हो गया 1/-1/2 है ना। और ये क्या हुआ फिर -2, करेक्ट। तो हमारे पास p के कोऑर्डिनेट्स आ गए 14 जो हमने लिया था, (0, -2). Isn't it the coordinates of C? So therefore P is equals to this, which coincides with given point C. So hence it is C, therefore C divides AB in ratio कितना है -3/2:1, और यू कैन से 3:2। और नेगेटिव का साइन आता है तो शायद आपको याद होगा हम इसको कहते थे एक्सटर्नली, करेक्ट। और अगर कोई पॉइंट दो पॉइंट्स को एक्सटर्नली डिवाइड करता है तो डेफिनेटली ए बी एंड सी आर कोलिनियर, ये कोलिनियर होंगे। So students, in this way, using section formula, we can actually prove that 3 points are collinear. Let us now take example 10, which says we have points A. I am presuming it as A, having coordinates 4, 8, 10. Point B having coordinates 6, 10 and -8. We are supposed to find in what ratio line segment joining A and B is divided by YZ plane. Is divided by YZ plane. Now I think I have told you, अगर ये YZ है तो इसका मतलब इसमें Y और Z तो है, X कोऑर्डिनेट 0 होगा, ठीक है। लेट P हम कहते हैं 0y, Z डिवाइड्स AB इन K रेशो 1, अपने पास तो यही है। और क्योंकि x कोऑर्डिनेट 0 है, देयरफॉर अपन x कोऑर्डिनेट ही कंपेयर कर देते हैं। 0 इज इक्वल्स टू mx2 प्लस nx1, तो ये हो गया 6k प्लस 4 इंटू 1 4 अपॉन k प्लस 1। when you cross multiply it becomes 6k plus 4 is equals to 0 and the value of k is -2/3. So -2/3 रेशो 1 में डिवाइड करते हैं, ठीक है ना। सो रेशो विल बी -2/3 रेशो 1 एंड ये कितना बन गया भैया 2:3 हो गया एंड अगेन इट इज एक्सटर्नल, ठीक है। बात आ गई समझ में। So students, I hope you will be able to do questions of the next exercise, which is exercise 12.3 as well as and miscellaneous exercise 12. Do your questions, ask the problems. Again, I should remind you that you should stay home, stay safe, and you must enjoy coordinate geometry. Thank you.